गुड इवनिंग। हाय सिद्धांत, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। अच्छे हैं। और बताइए क्या नया है, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो कुछ नया बताइए। आपकी दिवाली कैसी रही? हम्म, ठीक ठीक। ठीक ठीक। ओके। हाँ, और अभी मैं जम्मू आया हूँ। क्या आप जम्मू से बिलोंग करते हैं? हाँ, जम्मू हूँ। जम्मू में हूँ। आप जम्मू में हैं तो क्या आपका नेटिव प्लेस जम्मू है? क्या आप जम्मू से बिलोंग करते हैं? नो, तो जम्मू घूमने गए हैं आप? दिल्ली। आप जम्मू घूमने दिल्ली। गए हैं? हाँ, और अभी भी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका जम्मू में? क्या क्या देखा आपने ठीक वहाँ? है। अ, अभी तो पहुंचे थे पहले। अभी आप एक पहुंचे थे? घंटा हो चुका है। अच्छा। अभी आप 1 घंटे पहले हम्म, जम्मू पहुंचे हैं और आप क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं सिद्धांत। दैट्स कमेंडेबल। हाँ, क्योंकि हमें वैष्णो देवी टेम्पल जाना है। ओके, तो यू आर देयर फॉर टू गो टू वैष्णो देवी। तो वहां से थोड़ा मेरे लिए भी प्रेयर, थोड़ा भगवान जी को बोलना कि मेरी रीजनिंग वाली टीचर है ना, उनको भी ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज। राइट? ठीक है सिद्धांत? ठीक है ना? ओके। यस। थैंक यू सो मच। चलो तो अम, आपके बाकी दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन टाइम हो चुका है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ याद है आपको क्या टॉपिक पढ़ा था हमने पिछले क्लास में? कुछ नहीं याद, इतने दिन हो चुके। इतने दिन हो चुके हैं, मैं बताती हूँ क्या था। वो था एनालॉजी। एनालॉजी जहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए थे, उन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना था, और वही रिलेशन लेकर हमें थर्ड वर्ड के लिए चूज करना था। कुछ याद आ रहा है? ओके। ओके। लेकिन कुछ तब मुझे ये तो याद आ गया कि आपने इस करा था, लेकिन अभी ये नहीं पता उनको करना क्या था, कैसे अच्छा, सॉल्व करने देखा कोई आपको। बात नहीं। तो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी जो है ना, वो बिल्कुल मतलब सेम भाई बोलो, एक दूसरे के भाई हैं। मैम इस्मानी आ गई। ईशानी आगे। तो वहां से जो भी मुझे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको वहां पे रिकॉल करवा दूंगी कि यही था एनालॉजी में भी। वीडियो भी अच्छा, ऑन करो। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट, तो आई एम समथिंग which moves with you, which follows you। मैं आपके पीछे ही रहता हूँ, आपके साथ ही मूव करता हूँ, बट यू कैन नॉट कैच मी। शैडो। ओह वाओ ईशानी, कैन यू ओपन योर कैमरा? यस। ईशानी, हाउ आर यू डूइंग? मैम आई एम डूइंग फाइन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट ईशानी, आई एम डूइंग ग्रेट। So how was your Diwali? Tell me anything new. मैम इट सेम लाइक ऑल द दिवाली। It was same like all the usual Diwali. Okay, fine. So, अच्छे लग रहे हैं आप। थोड़ा उठ कर बैठेंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमें। चलो ये सही है ना? So today we are going to start a new topic. Name of the topic is going to be classification. ठीक है? Ishani, do you have any idea what classification is about? नो मैम। So in classification we have to classify the names given to us. Classify meaning grouping them. Suppose there are 10 kids in a line. So how can I group them? I have to make them in group. I can group them according to their name, right? I can group them, maybe, see, suppose I have a student whose name starts from A, B, C, and D. So I'll keep them in one group. Then E, F, G, H, another group, like that. I can also group them according to their height. I can also group them according to their gender. So that's what classifying is. But then there is one child who is not fitting in either of those groups. I cannot group that particular child. So that child will be the odd one out. That's what classification is. In classification, we find the odd one out.
But instead of finding मैम the odd one out, we should concentrate on making a group. Tell me, Siddhant. आप हिंदी में समझा मैम सकते हो जब आप इंग्लिश में बोल दोगे. अच्छा, ठीक है. Yes, Ishani. I just saw this video now. Which one? Classification. Oh, okay. तो क्लासिफिकेशन सिद्धांत, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपको ग्रुप करना है. आपको 4 से 5 नाम दिए जाएंगे, आपको 4 से 5 नंबर भी दे सकते हैं, आपको अल्फाबेट भी दे सकते हैं, और उनको आपको ग्रुप करना है. जो बचेगा वो ऑड वन आउट होगा. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक्स. चूज ऑड वर्ड, ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ऑड नंबर group, and chocolate questions. Okay. Now we Ma'am, are I starting. already saw your recording, so how can this class be then? No. Classification we have not completed. In the last class, we completed analogy. Ma'am, but then how can I see the classification You video? saw classification video. Are you sure? Sure. Yes, ma'am. You were not there on Sunday, the last class? Yes, ma'am, I was not there. Okay. Wait a minute. In that case, Siddhant, you were there in the last class? Yes, ma'am. No, thank you. Ma'am, this is the same recording. Can you show me something written on the screen? Just scroll it forward. Choose or find odd words. Elephant, deer, horse, fox, cow. Okay, ठीक है. In that case, okay, yeah, we did completed classification. Yeah, hi ma'am. We just saw Yeah. this recording of yours. It is posted 12 days ago. Okay, so that means the last class was classification only. So we'll move Yeah, forward because with we missed 2, 3 classes na, so we were just checking the all the recordings. okay, great. Yeah. In that case, just
Hi, Reyansh. Good afternoon. Have you joined yet, Reyansh? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Reyansh. How are you doing? Ma'am, You're fine? Great. So you are right on time because we are just starting. Reyansh, were you there in the last class? Ma'am, today's test. No. no, ma'am. Test will be tomorrow. Test we were supposed to do test today, but then since I have not sent the link, But, ma'am, but but since I have ma'am, the topic is puzzle test. no, okay, no, the name of the topic is puzzle test. It's not test. I'm telling that tomorrow you will have test. I will share the link today. Okay. This is a topic we will do today, puzzle test. Puzzle test is about classification type questions again, sitting arrangement and chocolate question. You can also take it as some deduction of the answer or finding out the answer. You will be given some information about the sitting arrangement of people or some information about their occupation or some subject they study. And we have to find by the answer by summing up all the information. The first question is classification type question, that in a school there were 3 teachers, A and B, were teaching Hindi and English respectively. Meaning A was teaching Hindi and B was teaching English. C was teaching English and geography both. Among the teachers was teaching maximum number of subjects? So that's very clear and very simple here. A is teaching Hindi and B is teaching English. They are teaching only one subject, whereas C is teaching 2 subjects, English and geography. So that's what our answer will be. मैम हिंदी में समझा दो. अच्छा, देखो सिद्धांत, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 टीचर है, हमारे एक स्कूल है, वहां पे 3 टीचर है, ए बी और सी. यहाँ पर लिखा है, वेट अ मिनट ईशानी, यहाँ पर लिखा है सिद्धांत की टीचर ए हिंदी पढ़ा रहे हैं और टीचर बी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. ठीक है. टीचर सी इंग्लिश और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहे हैं. आपको बताना है कौन से टीचर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. तो ए और बी तो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. ए हिंदी पढ़ा रहे हैं और बी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. सी ए 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी. मैम सी. ऑफ कोर्स सिद्धांत. यस ईशानी, टेल मी. Ma'am, so in the question, they told that A and B were teaching Hindi and English, but then A is teaching Hindi and English, and then B is also teaching Hindi and English. So shouldn't the answer be all are same? It's written that A and B were teaching English and Hindi respectively, meaning to say respectively A was given first. So the first subject is A is teaching Hindi and B is teaching English. Respectively word is the key. Respectively मतलब A पहले है तो हिंदी A पढ़ा रहे हैं और B इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. Okay, जिसका ma'am. नाम right? Yeah. Next is, in a school there were 3 teachers again. A and B were teaching Hindi and English. Respectively is not there. You see, respectively word is not here. In the last question, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास respectively word था, but यहाँ पर respectively words नहीं, word नहीं है. A and B were teaching Hindi and English. मैम हिंदी में समझाओ. हाँ, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके समझाऊंगी. ठीक है. देखो, so in the second question, सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे Ma'am, the option is D. Yes, ma'am, all of them are above because now A and B are teaching 2 subjects and C is also teaching 2 subjects. yes. सिद्धांत देखो, आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बी हिंदी पढ़ा रहे हैं. इट्स अबाउट हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट हियर. ये टेल मी रेयांश. Ma'am, do you know I finished my logical reasoning book which I got from school? Wow, that's great, Reyansh. अच्छा, so did you have any doubt? No, ma'am. Okay, and when is your Olympiad, Reyansh? Because now the Ma'am, Olympiad in January. you have in next year. Yes, ma'am, but I still finished the book. Oh,
So any Ma'am? other that you don't have? I also done the sample test. Sample test paper also is completed. Yes, ma'am. Good. You have made use of your. Ma'am, but the last two questions were so hard. Ma'am, you could not find the difference between three, but I figured out the difference. Oh, Ma'am, see, each one of the figures was facing left side, and I did not notice that one of the figure was facing the right side. okay. No, what do you have to tell in that classification technique? Ma'am, I think it was classification. Odd one out you have to find. Yes, ma'am. Ishani, tell. मैम मुझे क्वेश्चन पे in समझा 26th of दीजिए 26th of November, there's something in my school. It's called Logic Quiz. It's like a reasoning Olympiad, reasoning test, something. It's for the whole grade 3. There are only 10 questions. And before, we have to solve 30 worksheets so we can get 12 points bonus. Okay. Are you solving the 30 questions? Ma'am, I have 10 left. Are you finding any difficulty in solving those questions? Ma'am, in those 20, I didn't find any. But if I get in those 10, I'll ask you. Please do. You may share that in the group. You may forward and tag anyone to forward it to me. हाँ सिद्धांत सिद्धांत यहाँ देखो पहले वाले क्वेश्चन सिद्धांत हमें बोला गया है दैट ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सपोज मैं ये बोलूंगी दैट राहुल एंड रमेश हैव ब्लू एंड येलो बुक इसका मतलब राहुल और रमेश दोनों के पास बुक ये ब्लू एंड येलो बुक है ठीक है और अगर ये बात नहीं भी लिखी होती है अगर मान लो ये चीज नहीं भी है कि दोनों के पास दोनों हैं आपको नहीं पता चलेगा उसमें कि राहुल के पास ब्लू है या फिर रमेश के पास ब्लू है किसका कौन सा बुक है वो हमें नहीं पता चलेगा लेकिन अगर रेस्पेक्टिवली वर्ड हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ए और राहुल के लिए ब्लू है और रमेश के लिए येलो है रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आपको इन चीजों को लेना है ए पहले लिखा था इसलिए हिंदी ए पढ़ा रहा है और बी इंग्लिश पढ़ा रहा है बट वही मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा है ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश तो इसका मतलब ए और बी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ए भी हिंदी पढ़ा रहा है इंग्लिश पढ़ा रहा है और बी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं सी इज टीचिंग हिंदी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी सी इज टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी तो बी भी दो सब्जेक्ट ए भी दो सब्जेक्ट एंड सी ऑल्सो टू सब्जेक्ट So now we have to tell who among the teachers were teaching the maximum number of subjects. तो यहाँ पर you can tell that all of them are teaching two subjects. सारे ही टीचर दो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा all of the above. सिद्धांत, did you understand it now? अब समझ आया आपको? यस मैम बढ़िया. In a school there are three teachers. A, B were teaching English and Hindi. C was teaching English and geography. Which subject is taught by more than two teachers? Now, which subject is taught by more than two teachers? Ma'am, B, geography. मैम इंग्लिश Ma'am, no, ma'am, it's English. It's English only because English is taught by B and English is taught by C as well. So that would be English. है ना? In fact, English is taught by A also because A and B both of them they are teaching Hindi and English. Three teachers are teaching English. ठीक है? So the first question was related to classification type question. ठीक है? Next is our sitting arrangement question. Who is sitting where? So sitting arrangement में now all of you are very small, so you will get only linear arrangement. Sitting arrangement में या तो the people will be sitting in a rectangular table or they will just sit in a line or facing northward. ठीक है? सेकेंड टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पे लोग सर्कल में बैठते हैं वी ऑल्सो सिट समटाइम्स फॉर मे बी ईटिंग लंच विथ आवर स्कूल फ्रेंड्स और जस्ट प्लेइंग सम टाइप ऑफ गेम तो सर्कुलर अरेंजमेंट वुड बी वेरी हाई लेवल फॉर यू एंड सो टू अब नाउ फॉर नाउ यू विल जस्ट लर्न द लिनियर अरेंजमेंट
So 3. Tell me, Shani. Ma'am, linear arrange. So why can't we learn circular? Because circular arrangement is a little bit complex. It's a little bit complex. You will see that in your higher grade. Ma'am, हाँ, Ma'am, it's B, Shikha. ma'am, it's T. it's what? अच्छा, D option I have not, it's not visible Ma'am, here. it's B. It's B. Let's see. So 3 girls are sitting in. Ma'am, it's Ma'am, C. B. Ma'am, it's Okay, C. I have not even read it. I was talking to all of you. 3 teachers are sitting on a bench to be photographed. Shikha is left to Reena. So you keep on writing the information in the order. Shikha is left to Reena, right Reena, and left of Reena, Shikha. Then second is Manju is right of Reena. Reena, right, her right is here, Manju. See, this is right of Reena and this is left of Reena. Okay. Who is present in the left end of the photograph? Combine both of these. S, R, M. Left is this side left and this is the right side. So your answer is going to be Shikha. Right? I hope so that your answer was also Shikha. So you can see your answer is Shikha here. The next question is, there are 4 different houses A, B, A to D in a row. A is to immediate right of B. Okay, just keep on writing the information in the order you see them. A is to immediate right of B. Immediately means just immediate, next. Sometimes right also means that there is one gap. A is to immediate right of B, so A, B, right A. C is to immediate right of D. B is in the extreme left. So B is in the I know extreme the left. answer. You know the answer? Great. A, B, A and D, C. Combine both of these. दोनों को combine कर दो. B, A, D और C. Combine Ma'am, कर it's दिया. B. This is the order. Which house is in the second from the extreme right? This is left. ये left है Ma'am, D. आपका और ये right है. Ma'am, Yes, it's you are D. right. Yes, you are right. So extreme left से यहाँ से from this side extreme left 1 1 2 that would be the second house. D आपका second house है right side से. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर. तो दिस क्वेश्चन was sitting arrangement. ठीक है. The next type is chocolate question. Ma'am, there are only 2 types. There are, yeah. We have a puzzle test 1. In puzzle test 2 also there is some information. I mean there is some content. For puzzle test 1 we have to see this much only. Today we are doing puzzle test. Tomorrow you will have a test which will have question of analogy and classification. And then on next Saturday we will do puzzle test 2. Ma'am, So I this is think today's class will end early. no, I will not make it to end early. Yeah, look at this question. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, What? ma'am, in this question, ma'am, isn't C the extreme right? This is which one? This No, ma'am, in the fan, no, ma'am, not in the chocolate question. The question before that. this one. Chocolate, ma'am, yes, this one. हाँ, Ma'am, yes. so C is in the extreme left. I mean right. C extreme right, B extreme left. Yes, ma'am. Yeah. Madhu and Shobha are good in dramatics and computer science. Where is Siddhant? Madhu and Shobha are good in dramatics and computer science. Anjali and Madhu are good in computer science and physics. It's not written respectively, so Madhu is also good in dramatics and computer science and Shobha as well. Anjali and Madhu are good in computer science and physics extra. Madhu is good at how many subjects? Madhu is good at grammar and computer, so 2 subjects. 3. And physics 1, so 3 subjects. Yes, our answer will be 3 subjects. So you can see our answer is 3 subjects.
Madhu and Shobha are good in dramatics and computer science. Anjali and Madhu are good in computer science and physics. How many students are good at computer? Shobha and Madhu, they both are good at computer. So 2 students already and 1 more. Ma'am, 3. Anjali. 3, yes. 3. Yeah. Ma'am, again 3. What is this question also? Ma'am, 2 or 6, 3 again. 2, 1, yeah. So 3 2 times our answer. Next question. Now we have to answer the questions individually. And now we have got 3 questions here. 4 men A, B, C and D are reading a newspaper. The one who reads first gives it to C. The ones who read first gives it to C. That means कि C जो है ना वो second number पे है. C second number पर है. C is the second person reading the newspaper. The one who read last has taken from A. That means the person who is reading last has taken from A. A is in the third place. Right? D was not the first one to read. कौन बचा? B is left. Automatically. Ma'am, B the is left. first question's answer is B and the second question answer is D. Yes. Who read the newspaper first? B read the newspaper first. So this is the arrangement. Who read the newspaper last? So D read the newspaper last. What is the correct order in which they read the Ma'am, newspaper? B, C, A, D. Of course, yes. That would be BCAD. So you can see here. You may try to answer this one. Ma'am, it's a Kalesh. Ma'am, Kalesh, what's his name? Kailash. The Kalash. Kailash. Kailash Kher. Have you heard this famous singer name? Kailash Kher. Huh? Kailash Kher? Ma'am, I have Hmm. heard Kailash Colony. Kailash Colony. Yes, Kailash. You live in Delhi, Ranch, right? Yeah. Ma'am, Of I course. have heard Kailash Parvat. Kailash Parvat. Yes. So Kailash. Ma'am, Kailash Colony is my father's. It used to be my father's office. हाँ. Kailash is my father's friend's name. See, Kailash is the name. So Kailash, Govind, Harindra are intelligent. Kailash, Rajesh and Jitendra are hardworking. Which of the following person has a maximum quality? So that would be Kailash only. Kailash is intelligent and hardworking also. Right. Next one. Which of the following person is ambitious? What's the meaning of ambitious? Ambitious means they have some ambition in their life. They want to do something. They want to achieve some goal. So we don't know, right? It's not written here. Ma'am, it could be Rajesh and Jindra. Rajendra, it's not written here. They are intelligent and hardworking. We don't know ambitious who, I mean, this quality is in whom? Ma'am, Which they are hardworking. quality? They did not give. They are hardworking and intelligent. The answer is none of these. Yes, the answer will be none of these. Next again, Ma'am, Kailash. even we can say cannot be determinative, whatever it's Can't called. be determined. Ma'am, Can't. 3. How many people are only hardworking? Only hardworking. Ma'am, 2. 2. Because Kailash is both. Right? So that will be 2 only. Right? Now we will take 5 minutes break and be back.
सिद्धांत कहाँ चले गए थे आप? मैम मेरा नेट चला गया था। जम्मू में आपको नेटवर्क मिल भी रहा है, बहुत बड़ी बात थोड़ा है। थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा क्योंकि हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है। ओहो, ओके। तो अभी हमारा ब्रेक चल रहा था वैसे। Ma'am, there's even a place called Kailash Giri कैलाश गिरी है in Odisha. इन उड़ीसा। यू आर ओडिया, ईशानी? No, ma'am, I'm from Delhi यू आर फ्रॉम दिल्ली and Dehradun. एंड देहरादून। वेर इज योर नेटिव? Ma'am, देहरादून। my mother is born from Delhi. My father is born from Dehradun. So mostly we are from UP. ओके, नाइस। हाँ, so we were having break, Siddhant. Is the break over? चलो, let's continue then. Ma'am, if Riyansh comes only then. Ryansh is already there, I think. Ryansh, are you there? Okay, let him be back. Ryansh, are you there? We are starting, Ryansh. We are back from the break. Ma'am, can I show you what I was just cutting this? What are you doing? Craft? What Ma'am, I'll craft? show you. Ma'am, actually, I need to paste this and make. I already painted it and pasting it. Oh, that's creative. Ma'am, this is a canvas. So I'm gonna paste this part here. I need to cut it. Okay, that's creative. From where did you got that idea? No, I got a kit, ma'am. Oh, you got a great, great, huh? But I'm always envious of your micros. Ma'am, I tested what's in a dead leaf. Oh, what did you see in it? Ma'am, I have kept it. You have kept it. Ma'am, see. Ma'am, the dead leaf. The dead leaf, but you just collected a dead leaf. Did you check it under microscope? No, ma'am, I collected it. And ma'am, I'm also going to start a stone collection now, ma'am. What will you do with that stone? You'll build your house one day. No, ma'am, I just collect stones. Stones like what? Different type of stones. Yeah. Oh, but that you will find on beaches. I just need to stick it now, ma'am. I have to keep it safe now. Ma'am, I finished my drawing after the class. So shall we continue? Let's Yes, continue. Yeah. Now we are looking at the exercise questions here. Ma'am, why isn't anyone here? Look, I was there before you. we were waiting for you only. So the question is that 4 friends, Paul, Ali, Sia, and Tim, all of you will keep your cameras off. So what will I do? I'll see my own face. सिद्धांत, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? आपकी मम्मी ने आपको कहा था ना कैमरा ऑन रखने के लिए, कैमरा ऑन करके रखिए। Paul, Ali, Sia, and Tim have different heights. Tim is the second tallest person. हमारे पास कितने लोग हैं? 4 लोग हैं और उन 4 के डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स हैं। टिम सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। टिम सेकंड प्लेस पे है, सेकंड टॉलेस्ट।
Paul is taller than Sia only. ठीक है. Who is the shortest person in the group? आपको अरेंजमेंट बनाना है and then you have to answer the question. So according to the first information, Ma'am, B, Sia. Tim is the second tallest person, meaning whoever is the first, the second place is Tim. And Paul is taller than only मैम Sia. हिंदी में बताओ. हाँ, हिंदी में ही बताऊंगी अभी. Paul is taller than only Sia. Paul सिर्फ सिया से लंबा है. मतलब पॉल सेकेंड लास्ट है और सिया सबसे शॉर्ट है. So Paul will be on second place. I mean the second tall from the last, and Sia the shortest. And Ali is left, so we will put Ali here. Ali को हम फर्स्ट में रख देंगे क्योंकि अली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था और जो बचा है वो अली ही है. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. टिम इज द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, हमने उसको फिक्स कर दिया यहाँ पर. अब हमारे पास 3 प्लेसेस बाकी हैं. सेकेंड, पॉल इज टॉलर देन सिया ओनली. पॉल सिर्फ सिया से लंबा है, मतलब पॉल सेकेंड लास्ट है. तो यहाँ पर भी मैंने दोनों को फिक्स कर दिया. अब जो बचा है वो अली है हमारा. हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन? तो सिया इज द शॉर्टेस्ट पर्सन. सिद्धांत, इंटरप्ट मी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नेक्स्ट, who is the third tallest in the group? The information remains Ma'am, same. Paul. Paul. Third tallest, first, second, third. Third tallest कौन है? सिद्धांत, third tallest कौन है? मैम सिद्धांत, आई डोंट नो. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सबका. आई डोंट. यू डोंट नो. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सबका अरेंजमेंट. मैंने यहाँ पे लिखा है सबका अरेंजमेंट. मैं आपको दोबारा समझाऊं सिद्धांत कैसे बनाना है अरेंजमेंट. आपको बस जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ना है और उसको लिखना है. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे पढ़कर बताओ तो सिद्धांत, ये क्या लिखा है ये वाला सेंटेंस. द सेकंड प्लेस्ड टॉलेस्ट. पर्सन इन द टॉलेस्ट. हमें टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. ग्रुप. आपको समझ में आ रहा है ना हम किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम टॉल की बात कर रहे हैं. 4 लोग हैं और सबके अलग अलग हाइट. हमें बोला कि टिम सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है, मतलब टिम का जो हाइट है वो सेकंड प्लेस में टिम को हम रखेंगे. ठीक है. और लिखा है पॉल इज टॉलर देन ओनली सिया. पॉल सिर्फ सिया से लंबा है. राइट. मैं सिर्फ अपनी बहन से लंबा हूं. इसका मतलब घर में जितने लोग हैं वो आपसे लंबे हैं. तो पॉल विल बी द थर्ड पर्सन, आई मीन द थर्ड टॉलेस्ट. एंड जो लास्ट में होगी वो सिया होगी क्योंकि सिया पॉल से छोटी है, शॉर्ट है. एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विथ अली. अली को कोई भी फिक्स पोजीशन मिला नहीं था तो मैंने अली को यहाँ पे पुट कर दिया. पहला क्वेश्चन में आपको बताना तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी सिया है. अली टॉलेस्ट, देन टिम, देन पॉल एंड लास्टली सिया. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोलना है हु इज द थर्ड टॉलेस्ट इन द ग्रुप. तीसरे नंबर पे कौन है थर्ड टॉलेस्ट. तो थर्ड टॉलेस्ट पॉल है, आप देख सकते हो यहाँ पर. अब समझ आया सिद्धांत आपको? ईशानी, डिड यू अंडरस्टैंड ईशानी? Yes, ma'am. Next question, 4 friends again. Paul, Ali, Tim and Sia have different heights. Tim is the second tallest in the group. Paul is taller than only Sia, who is the tallest in the group. So you know the answer. I have drawn it here already. Who is the tallest among the group? In the group? Tallest कौन है? अली. Ali. So your Ali. answer is Ali. Fourth, in the final round of race, Tiger finished before Lion but behind Goat. Who came last? Tiger. Tiger finished before Lion. Lion. But, sorry. Ma'am, goat came first, lion came last. Yes, you are right. And here it will be Goat. Tiger finished before Lion. तो उसको लिखोगे T before
lion. In the second place, lion before lion but behind goat. So lion is later than goat. ठीक है? Okay. You have to write it the T in the middle. आपको टाइगर बीच में लिखो. टाइगर फिनिश बिफोर लायन, तो टाइगर फिनिश बिफोर लायन, और गोट उसके पहले. आपको ये तीनों साथ में ही लिखना होगा. यू कैन नॉट ब्रेक द इंफॉर्मेशन, राइट? सो योर अरेंजमेंट विल बी हु केम लास्ट. टेल मी सिद्धांत, मैम बताइए. फिफ्थ का डी. फिफ्थ का डी. 4 का आपने बोला नहीं. 4 का क्या है आंसर? सबसे लास्ट कौन आया? हु केम लास्ट? लायन केम लास्ट. हाँ, फिफ्थ का डी. फिफ्थ का यू आर सेइंग नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज. देखते हैं. Amongst three friends, Ritu, Sonam, and Tia each scored different marks in the examination out of total 200 marks. Sonam scored more marks than Tia only. सोनम ने सिर्फ टिया से ज्यादा लेके आई थी, मतलब सोनम सेकंड लास्ट है. रितु स्कोर्ड मोर देन सोनम. रितु स्कोर्ड मोर देन सोनम. हाँ, कंबाइन बोथ ऑफ दीज. रितु, सोनम एंड टिया. वन मोर फ्रेंड. अच्छा, ओनली 3 friends were there. Who scored the lowest marks in the examination? तो ये आपने क्यों बोला नन ऑफ दीज? टिया. टिया. नन ऑफ दीज क्यों बोला सिद्धांत? आपने आपने डी बोला ना. टी बोला, डी बोला सिद्धांत? डिड यू से टी और डी? मैम टी फॉर टाइगर, डी फॉर डॉग. व्हाट? टाइगर. टाइगर. अगर आपने टाइगर बोला है, टिया बोला है, तो आपने आपका आंसर सही है. रेयांश, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग योर क्राफ्ट नाउ ओनली? डोंट डू इट. आंसर द क्वेश्चन हियर. हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स? Ma'am, Hmm. ma'am, I read this question and ma'am, I know, ma'am, it's Ritu. It's Ritu, yes. So your answer will be Ritu. सबसे हाईएस्ट स्कोर किसको आया है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. रितु फर्स्ट, सोनम सेकंड एंड थर्ड टिया. Ma'am, Ritu is like me. Ritu is what? Ma'am, Ritu is like me. And ma'am, I also got 50 out of 50 in my exam. Wow, that's great. Awesome. That's awesome. Awesome. Awesome actually. चलो. Next question. A, B, C and D are friends. D and A have the same profession. D और A के प्रोफेशन सेम है. व्हाट प्रोफेशन? वी डोंट नो. वो दोनों सेम काम करते हैं. क्या जॉब करते हैं, क्या काम है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वी डोंट नो. B इज अ डॉक्टर. B डॉक्टर है. देयर आर 2 engineers, 1 doctor and 1 teacher in the group. तो 2 engineers, D और A का प्रोफेशन सेम है, तो इसका मतलब D और A आपके इंजीनियर्स हैं. एंड कौन बचा? C. तो C का क्या हो जाएगा प्रोफेशन? टीचर. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ D? D का क्या काम है? D का क्या प्रोफेशन है? Engineer. यस. नेक्स्ट, हु इज द टीचर इन द ग्रुप? यही है इंफॉर्मेशन. हु इज द इंजीनियर? Ma'am, हु इज द टीचर? C. C is the C. teacher. Ma'am, 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 like C. Ma'am, A is A, B is B, C is C, and D is D. Ma'am, in the options. मैम या दोबारा बताओ हिंदी में. मैं हिंदी में ही समझा रही थी. आप कहाँ थे? आप बात कर रहे थे वहां पर. व्हाट मैम? मैं हिंदी में ही समझा रही थी सिद्धांत. आप क्वेश्चन पढ़िए अब. 7 नंबर. आपको 7 नंबर चाहिए, 8 नंबर चाहिए? 7 और 8 का इंफॉर्मेशन. नंबर. अच्छा, 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए आप. मुझे क्या है किसी का नहीं देखो. पता. 7 का भी नहीं पता है. अच्छा नहीं, का भी. 7 और 8 का इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है. 7 और 8 का इंफॉर्मेशन सेम है, तो हम 7 का इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, उसी से हम 8 भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, 7 नंबर पढ़ के बताइए मुझे. पढ़ के सुनाइए. सिद्धांत, रीड आउट. मैम, S A B C and D
are friends. D and A have the same प्रोफेशन, profession. B is प्रोफेशन a dog. देखो आपको पता है प्रोफेशन मतलब सिद्धांत, Profession? प्रोफेशन मतलब पता है आपको? No, हाँ, तो प्रोफेशन मतलब no, होता है ma'am. उनका काम, प्रोफेशन मतलब होता है उनका काम, क्या काम करते हैं। तो डी और ए दोनों सेम तरह, दोनों सेम काम करते हैं। मतलब डी और ए, अगर डी डॉक्टर है तो ए भी डॉक्टर है, अगर डी इंजीनियर है तो ए भी इंजीनियर है, लाइक दैट। ठीक है। तो डी और ए का जो काम है वो सेम है। फिलहाल हमें नहीं पता कि क्या प्रोफेशन हो सकता है उनका। बी डॉक्टर है तो बी का डॉक्टर मैं लिख दूंगी यहाँ पे डॉक्टर। देर आर टू इंजीनियर्स, इस ग्रुप में ए बी सी और डी के जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं उसमें दो इंजीनियर्स हैं और एक टीचर है। यहाँ देखो ये साफ साफ लिखा है दैट डी और ए दोनों का प्रोफेशन सेम है और दो इंजीनियर्स भी हैं ग्रुप में। कहने का मतलब डी और ए इंजीनियर्स ही तो हैं, डी और ए इंजीनियर्स हैं क्योंकि दो इंजीनियर्स हैं और दो लोग भी हैं जिनका सेम प्रोफेशन है। तो दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और डी और ए इंजीनियर निकल गया। एंड वन डॉक्टर एंड वन टीचर, एक डॉक्टर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बी डॉक्टर है, एक और सी बचा है तो सी के लिए टीचर हो जाएगा। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाला। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, डी क्या काम करता है। सिद्धांत आप ही से पूछ रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। मैम कौन हाँ, सा क्वेश्चन? 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। D and A have the same. आप क्वेश्चन क्यों पूछ पढ़ रहे हैं दोबारा? आपका क्वेश्चन अब है, मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया है सिद्धांत, आपको बताना है डी का प्रोफेशन क्या है। देखो मैंने यहाँ लिखा है डी और ए का प्रोफेशन लिखा है, बी का प्रोफेशन लिखा है और सी का भी प्रोफेशन लिखा है। डी का प्रोफेशन क्या है? मैम मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा जो आपने लिखा है। अच्छा, इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर लिखा है, इंजीनियर यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा था, ये इंजीनियर लिखा है। ठीक है, उनका प्रोफेशन है इंजीनियर। तो डी का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 सिद्धांत। क्या यस आपको समझ आया? अब अगर यस समझ आया तो आप मुझे इसका सेकेंड 8 नंबर का आंसर दीजिए। 8 नंबर का इंफॉर्मेशन यही है, आपको यही इंफॉर्मेशन यूज करना है। आपका क्वेश्चन है हु इज द टीचर इन द ग्रुप, उस ए बी सी डी फ्रेंड ग्रुप में टीचर कौन है? मैम सी। बढ़िया, यही तो था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन है माइक एंड सैम आर गुड इन डांसिंग एंड सिंगिंग। माइक और सैम जो है दोनों चीजों में अच्छे हैं, डांसिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। एरन एंड माइक आर गुड इन सिंगिंग एंड पेंटिंग। एरन और माइक दोनों सिंगिंग में अच्छे हैं और पेंटिंग में भी अच्छे हैं। माइक इज गुड एट हाउ मेनी सब्जेक्ट, हाउ मैम मेनी 3। सब्जेक्ट? माइक इज गुड एट dancing and singing already. No, मैम 2। 2। Not 3, it's 3। It's No, three only. 4। 4। No, मैम। no, देखो Mike and Aaron, मैम sorry, it's Mike and 3, Sam, 3, 3। yes, dancing and singing में अच्छे हैं। तो दो 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 हो गया, माइक के लिए भी दो और सैम के लिए भी दो फिलहाल तो। देन माइक और एरन दोनों सिंगिंग में अच्छे हैं और पेंटिंग में अच्छे हैं, तो माइक एंड एरन सिंगिंग में, तो सिंगिंग तो ऑलरेडी इज रिपीटेड हियर एंड दे आर आल्सो गुड एट पेंटिंग। ठीक है, so total we have only 3 subjects and Mike is in all of those. Mike is good at all those subjects. ठीक है, so that would be 3 subjects. सिद्धांत क्या आपको समझ आया? सिद्धांत देखो कंसंट्रेशन कहीं और है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mike is good at how many subjects? Oh, it's the same question. It's No, ma'am, just respectively। अच्छा, ओहो, the information is different here.
Mike and Sam are good in dancing and singing respectively. That means Mike is good at dancing and Sam is good at singing. Aaron and Mike are good in singing and painting. So Mike is good at Ma'am, 3 subjects. painting, and Mike also is good at dancing. So Mike again is good at 3 subjects. Mike is good at 3 subjects. सिद्धांत, प्लीज रिस्पॉन्ड. अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं आगे चली जाऊंगी. Ma'am, Siddhant has left. Maybe he's facing, but actually he has gone to Jammu to visit a temple, Vaishno Devi. And in Vaishno Devi there is Ma'am, I a also curfew. went there last year. I also have visited Jammu. Ma'am, when I went to Kashmir once, and ma'am, I made a snowman there. You made a snowman. You went there while it was snowing. Ma'am, one of my friends tells Kashmir as Kashmir. Why? One of my friends tells Why? No, why? because I don't know. Okay. Ma'am, because she speaks that accent. Maybe. Ma'am, and she's ma'am, like some people say onions rather than onions. Onion. Yes, ma'am. Ma'am, because she's even born in Kashmir, but she says Kashmir as Kashmir. So the Kashmiris say Kashmir as Kashmir. No, ma'am, but I know, ma'am, they love apple. They love apple. Ma'am, when I went there, all they was giving us fruit was apple. Yes, ma'am. I saw one South Indian movie, and in that movie, I don't know who was the actor. So he was posted in Kashmir, and in Kashmir, if you don't have food or if you did not cook food, you can go from one home to another to ask for Ma'am, some. I remember. I know that movie. I just forgot the name. So that actor was going to each of the. Yes, ma'am. He got posted to Kashmir, and he was only finding apples. And once he was going, and there was a war of Pakistan. It invaded, right? Yes, Pakistan had come. yes. So everyone was just giving him an apple. Yes, ma'am. And he was saying, ma'am, is there? He was saying that is there not something else? And then the lady. Ma'am, I think Kashmir people don't have to go to the doctor. Because there's a rhyme that an apple a day keeps a doctor away. Nice. Ma'am, can you do a tongue twister? Yes, we can do tongue twister. Let's finish this question. We will finish these. How many? We have only 9 questions left. Yeah. We have only 9 questions left. So once we finish those, we'll do tongue twister. The question is, in a school, there were 5 teachers. A, B were teaching English and Hindi. C and B were teaching. C or B English or geography पढ़ा रहे थे. D and A were teaching maths and Hindi, and E and B were teaching history and French. Who among the following teacher was teaching the maximum number of subjects? तो देखते हैं. Although we have to do box. Ma'am, B. Yes. Let's see. So A was teaching Hindi and English. A was also teaching mathematics. B पढ़ा रहे थे इंग्लिश. B आपके ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं. B आपके Ma'am also Hindi. B हिंदी भी पढ़ाते हैं. Ma'am history and French. Oh my God, so many subjects. काफी इंटेलिजेंट है ये तो. Talented. Ma'am, ma'am, I know a little bit of French. Wow, that's so great. I also. Hola. Wow, what does that mean? Ma'am, that's Spanish. Hola. Yeah. hola. Bonjour is. Bonjour. No, then the J they don't say. No. If Hola is hello in Spanish. If someone's name is Juan, no, we will read it as Juan, but they say it Juan. Juan. Teacher B might be used to hear the noises of the children's.
Ma'am, I get also because our class shouts like a fish market. Ma'am, Hola, amigo. Okay, okay. Which all subject does C teaches? English? No. C teaches English Oh, and geography. ma'am, very less subject. Very less subject, less talented. But yeah, less load, huh? C, D. What does D? Do we have D, A, B, C? Mathematics and What does Hindi. D teaches? D, Mathematics and Hindi. mathematics. Ma'am, we will be frustrated with all the noise. So who frustrated? B. Ah, right. And E. E was teaching history and History and French, ma'am. तो आई History पुट and ऑल ऑफ French. द इंफॉर्मेशन, मैंने सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया यहाँ पर। आपको बताना है सबसे मैक्सिमम सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे Ma'am, I said हैं। it's B. टैलेंटेड B, मोस्ट ma'am. ई। Ma'am, the most talented is B. नाउ विच ऑफ द पेयर वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी? ज्योग्राफी और हिंदी दोनों कौन पढ़ा रहे थे? तो ज्योग्राफी आपके बी तो पढ़ा रहे हैं, Ma'am, B. बी। और उसके अलावा और कौन पढ़ा रहा है ज्योग्राफी और हिंदी? नो बडी एक्चुअली, नो बडी। बी इज टीचिंग बी एंड ए। नो, डिड वी लीव एनी इंफॉर्मेशन? बी एंड सी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिंदी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ए आपके ए वॉज टीचिंग मैथ्स मैथ। नो, सो वी आर करेक्ट। यहाँ पे आपका ए और आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ दी, राइट? विच पेयर? सो बी इज टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड हिंदी बोथ, बट no other teacher is teaching geography and Hindi apart from you. None of these. Our answer will be none of these. सिद्धांत कहाँ हैं आप? क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धांत? Ma'am, do you know while walking to Jammu Kashmir, it was super hard. क्या मैम? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धांत? यस मैम। ठीक है, तो फिर आंसर भी कर दीजिए सिद्धांत। नेक्स्ट Ma'am, क्वेश्चन। it's B. मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट? मोर देन दो टीचर। कहाँ कहाँ आपको दो दो, आई मीन कहाँ कहाँ आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं विच आर लाइक फ्रीक्वेंट? So that can be which one? Hindi? Ma'am, Hindi. Hindi, yeah. Hindi, how many teachers are teaching? One. Ma'am, it can also be English. It can also be English, yes. What is the Hindi and English? So you see English is not in the option. So that means Hindi will be our answer. है ना? English is not in the option. Hindi हमारा आंसर होगा। D, B and A were teaching which of the following subject? D, B and A? History. D, B and A were teaching which of the following subject? आप यहाँ पर देख लीजिए। डी, बी और ए कॉमन क्या है इनमें? मैथ्स एंड हिंदी। Ma'am, Hindi. बट बी इज नॉट टीचिंग मैथ्स, बी इज नॉट टीचिंग मैथ्स। लेट्स सी, सो दैट Ma'am, शुड it's बी Hindi. हिंदी ओनली, है ना? हिंदी ओनली, डी, बी एंड ए। हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग लेस देन टू? इनमें से कौन दो से कम सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम वर टीचिंग ऑल एट मोस्ट टू सब्जेक्ट, एट Ma'am, लीस्ट he टू was सब्जेक्ट, teaching the सॉरी। less. हाँ, He was teaching the less. no, Yeah. at least all of them were teaching two subjects, no? Everyone was teaching at least two subjects, less than two subjects we have to tell. Okay. दो से कम तो कोई भी नहीं है ना? So there is no such teacher. सिद्धांत, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं आप, और आप आंसर भी नहीं कर रहे हैं। मैम मुझे आंसर नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था सिद्धांत, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स, आई मीन सबके सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। हमारे पास 5 टीचर थे, ठीक है? ए, बी, सी, डी एंड ई। हमारे पास 5 टीचर थे और उनके वो लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये भी हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था। मैंने वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग टीचर वाज टीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट।
सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है सिद्धांत? आप यहाँ पे देखिए, सारा नंबर मैंने लिखा है। हिंदी इंग्लिश मैथ्स, ए हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बी आपके इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, बी आपके 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ए आपके 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सी 2 सब्जेक्ट, डी भी 2 सब्जेक्ट एंड मैम बी 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 बी। सही कहा आपने। विच ऑफ द पेयर वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी? कौन से टीचर बोथ ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ा रहे हैं? तो वो सिर्फ बी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी और हिंदी दोनों। उनके अलावा और कोई भी टीचर नहीं है जो ज्योग्राफी और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे चूज किया है सिद्धांत नन ऑफ दी। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट? 2 से ज्यादा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? तो आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट है कि तो ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, वो है आपका हिंदी। हिंदी ए पढ़ा रहे हैं, बी पढ़ा रहे हैं और डी भी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा इंग्लिश भी है, जो कोई जिसको ए पढ़ा रहे हैं, बी पढ़ा रहे हैं और सी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन में सिर्फ हिंदी दिया गया है तो हमने हिंदी चूज किया। हालांकि आपका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट इन द ऑप्शन हमें सिर्फ हिंदी मिला तो हमने हिंदी चूज किया। फिर हमें पूछा है डी बी और ए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमने चूज किया हिंदी ओनली। ये सारे एक कॉमन लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, हिंदी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन था सबसे कम, मतलब 2 से भी कम कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखिए 2 से कम तो कोई भी टीचर नहीं है जो पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट। सबसे कम तो 2 है और 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने आंसर किया है कोई भी टीचर नहीं। देर इज नो सच टीचर, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो 2 से कम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो यही तो था। नेक्स्ट इज काइली, गिलियन, हिना आर इंटेलिजेंट। काइली, रिया एंड जेनिफर आर हार्ड वर्किंग। देखो यहाँ पे काइली है जो कि दोनों क्वालिटीज है काइली में। काइली, गिली और हिना जो है वो लोग Ma'am, इंटेलिजेंट Kylie has the most qualities. है। काइली के पास 2 क्वालिटीज हैं, गिली के पास एक है, हिना के पास भी एक है क्वालिटी, रिया के पास भी एक क्वालिटी है और जेनिफर के पास भी एक क्वालिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काइली। दूसरा क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज स्मार्ट? वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हमें इंफॉर्मेशन दिया इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग का। स्मार्ट के बारे में तो आपने बात ही नहीं करी क्वेश्चन में, तो स्मार्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दी। सिद्धांत प्लीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ आपके लिए। लेकिन मैम मुझे समझ नहीं आ रहे। क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर घूम रहे। कहाँ घूम के आए हो? अभी बाहर घूम कर आए हो ना? बाहर से घूम। नहीं घूम कर आया, आप बैठे हैं वहां लेकिन आपका कहीं दिमाग नहीं कहीं आया। और। नहीं नहीं, आप बैठे हैं वहां लेकिन आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो तो जरा, 16 नंबर सिद्धांत। कौन सा नंबर? 16 नंबर सिद्धांत। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा सिद्धांत। 1 सेकेंड बहुत जल्दी हो जाता है। ओके हमारे पास टाइम कम है ना। वन। ओके, देयर इज ऑन टच टीचर। अरे, वेर यू सी टीचर? टीचर कहाँ दिख रहा है सिद्धांत? वेर? लास्ट लास्ट वर्ड लिखा है टीचर। सिद्धांत 16 नंबर मैंने यहाँ पे टिक भी किया है। 16 नंबर, इसी से मुझे पता चल रहा है कि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है बाहर। पढ़ो जरा, या फिर हो सकता है आप थके हुए हो सिद्धांत। थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, पढ़कर सुनाइए मुझे 16 नंबर। देयर इज ऑन टच टीचर। डरे, कहाँ पढ़ रहे हो सिद्धांत? 16 नंबर सिद्धांत।
अच्छा, जहाँ पर डे आप पढ़िए। ली ली काइली, काइली जीली, गेली, जीली गीली, एंड गीली और जीली को, हाँ ठीक है, जीली, हिनी हिना, Annie हिना are in आर इंटेलिजेंट। Raina, Rai, रिया, Ria and जेनिफर, जेनिफर, Jen. जेनिफर Following ये person दोनों has हार्ड वर्किंग है। Racer are had working. Which of the following person has the maximum quotes? क्वालिटी, इनमें ऐसा कौन सा पर्सन है जिसमें मैक्सिमम क्वालिटी है, सबसे ज्यादा नंबर क्वालिटी किसके पास है? तो सबसे ज्यादा नंबर क्वालिटी काइली के पास है, क्योंकि काइली इंटेलिजेंट भी है और काइली हार्ड वर्किंग भी है। बाकी लोगों के पास सिर्फ एक एक क्वालिटी है, दो लोग इंटेलिजेंट हैं और रिया एंड जेनिफर हार्ड वर्किंग है सिर्फ। हमारा अगला क्वेश्चन था, विच Okay. ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज स्मार्ट, इनमें से कौन स्मार्ट है? तो स्मार्ट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि स्मार्ट का हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इंटेलिजेंट के लिए दिए हैं और हार्ड वर्किंग के लिए दिए हैं, तो स्मार्ट का तो कोई भी नहीं हो सकता। So none of those. हाँ, नन ऑफ दीज। इन अ मार्च पास्ट 7 पर्सन वर स्टैंडिंग इन अ रो, 7 लोग थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। Q is standing left to R, R के लेफ्ट में Q, सेकंड, बट राइट ऑफ P। Q is standing left of R, so oh, Q standing left of Ma'am, it R should be P Q and R. N. O is standing right of N and left of P. Then similarly, R is standing right of R and left to T. So this is the set of information which we got. Find out who is standing in the middle. Combine all of these. Ma'am, Right? K and P. Hmm? K and P. K and P. K and P. Where do you see K? K तो है ही नहीं हमारे पास। Ma'am, he is talking about question number 19. सिद्धांत, ये क्या है? सिद्धांत में 18 नंबर से हम डिस्कस कर रहे हैं, आप 19 नंबर का आंसर कर रहे हैं सिद्धांत। Ma'am, O D. हमें साथ में चलना पड़ेगा सिद्धांत। Ma'am, D O. हाँ, लेट्स सी दैट। तो P Q R S T, did I write only 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Did I repeat any? 1, 2, 3, T O Ma'am, N. it's correct. It should N O P Q R S T. Yes. N O P and after that Q R and then S and T. Okay. So yes, your middle one will be Q. Okay. Next one. 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P. So S can be seated next to P, meaning Ma'am, K either and left. P. ठीक है सिद्धांत, लेट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओहो, तो S is sitting next to P, that means S can be seated to the left or right of P. So let's write it both. Then, but not of T. S
is not seated to next of T. So I cannot write that. No need to write. K is sitting next to R. K can be seated next to R any place. Let's write it both. Who is sitting on the extreme left? Who is sitting on the extreme left? R is sitting on the extreme left. T is not sitting next to K. Who is sitting adjacent of S? We have to tell who is sitting adjacent to S. Right? So let's combine it. Why did I write R 2 times? K is sitting next to, it should be K here. T is not sitting next to K. Ma'am, Tell me. but the K is not looking like K. Oh, Siddhant, understand it, no? K. Sitting on the extreme left. R, who is sitting on the extreme left? Okay. 1, 2, 3, and 4. R position is already fixed. We have S, P, and R and K. R is already done. R right only is left for K. So left is not free. R's left is not free, right? And then K is sitting here. Another thing which was given to us is T is not sitting next to K. So T can't sit here. T can't sit here also. T has to sit in the end only. Two people are left, P and S. So S will not sit in the left of P but to the right of P. So your arrangement will be this. Now the question is, who is sitting adjacent to S? Adjacent to S can be T or P. So P and T will be our answer, not K and P. Tell me, Shani. What's the meaning of E? As The what? option Adjacent. E. Option E. Insufficient information, meaning we don't have sufficient information to answer the question. We need more information. Okay, ma'am. Okay. So next question, the last one. In the final round of race, Rishon finished first before Peter, but behind John. So Jason was behind John. Ma'am, John. Jason Ma'am, Peter. before Peter, but behind John. Ma'am, John. John is the first person. John will be your answer. Okay. So these were some 20 questions for your. Ma'am, can I leave? Okay, Siddhant, you will leave. You will join tomorrow. Ma'am, tomorrow's test. Tomorrow. Yeah, tomorrow is test. And tongue twisters. Yeah, I'm opening that tongue twister. Ma'am, can I leave? Oh, you also want to leave, Riyansh? You only asked to for tongue twister. I'm hungry. Okay. So then we'll do the tongue twister tomorrow first thing. Okay, ma'am. Okay, Bye, Ishan? ma'am. Okay, ma'am. Bye, Okay, ma'am. bye-bye Thank then you, all of ma'am. you. Take Take care, care. ma'am. Ma'am, Bye-bye. हाँ, ma'am, बताइए. ma'am, हाँ, I am not available tomorrow. you मैं will. कल नहीं आ सकता क्लास में. ठीक है, तो उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप अपना टेस्ट दे दीजिएगा बस, जब भी आपको टाइम मिले, ओके. है ना? नेक्स्ट सैटरडे तक आप टेस्ट दे देना अपना, है ना? चलो बाय बाय देन, टेक Bye, केयर, ma'am. बाय अगर बाय. मैंने पहले ही दे दिया होगा. तो कोई बात नहीं, बाय मैम. मुझे स्कोर मिल जाएगा आपका. बाय ओके बाय. मैम. बाय मैम.